1. Hello, welcome to my channel ANWAR'S classes, my dear students. Last time में हमने पढ़ा था assumptions of law of diminishing marginal utility. आज हम पढ़ेंगे schedule and diagram and its exemptions. Okay? Now exemptions पढ़ेंगे और देखिए कैसा होता है ये. सबसे पहले we will prepare schedule. In the given schedule, you see there units and marginal utility. Schedule shows when units of the commodity increases, marginal utility diminishes with every stage. At first unit, consumer is getting 8 utility, means 8 marginal utility. When consumer consumes from 1 unit to 2 units, 3 units, 4 units, 5th unit, utility diminishes at every stage, and at 5 units consumer gets 0 utility. But when consumer further consumes at 6 unit, he will get negative utility. Dissatisfactions. Okay, my dear student. Suppose अगर आप कोई दावत में जाते हैं और आपको किसी ने बोला भाई 2 गुलाब जामुन और खा लो, आप खाते हो, 3 खा लो, 4 खा लो और आप 5 खा लो और आप वहां पे ओहो इट्स ऑल राइट नहीं खाना है अभी बस, लेकिन किसी की मोहब्बत में और खा लेते हो तो आपको फिर भैया दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या रहो तैयार. तो उसी को बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन पॉइंट. ओके माय डियर स्टूडेंट. नाउ आफ्टर द प्रिपेयरिंग शेड्यूल वी विल प्रिपेयर डायग्राम. हाउ द डायग्राम विल बी वी विल सी नाउ. लेट्स कम टू द पॉइंट. हियर देयर आर 2 axes, one OY axis, another is OX axis. My dear student, on OY axis we have taken marginal utility, whereas on OX axis we have taken units consumed by the consumer. Now by plotting these points we will get a utility curve. How to prepare a curve? Let's see. Now at first unit consumer is getting 8 marginal utility. When consumer is consuming 2 units of the commodity, he will get 6 utility. When consumer is consuming 3 units, he will getting 4 utility, marginal utility. When consumer consume 4 units, he will get 2 utility, marginal. When consumer is consuming, my dear student, 5th units, he is getting 0 marginal utility. Here, that is called point of satiety, means full satisfaction point, fully relaxed, no need to further consume. But when consumer further consume, he will get negative utility, that is -2 on 6 units. ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा. अब इसके बाद आप देखेंगे वी विल ड्रॉ डायग्राम बाय प्लॉटिंग दिस पॉइंट. द डायग्राम विल बी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सच एज लाइक दिस. Okay, my dear student, this shadow shows dissatisfaction. Okay, now we already completed here diagram, and how we will explain the diagram. We say that there are 2 axes, OY axis and OX axis.
On o-axis we shown marginal utility. On o-axis we shown unit consumed by the consumer. As consumption increased, his marginal utility diminishing at every stage. So diminishing marginal utility curve downward from left to right. It's all right. It's completed now. Very easy. Okay, my dear student. And as increases in the stock, he will get less and less utility from every additional unit. It's enough. Okay, my dear student. So now we completed here schedule and the diagram. Next is that exception to the law of DMU as written on the blackboard. Exception of LDMU, law of DMU. The first exception of the law of DMU, my dear student, is hobbies. आपको अगर कोई चीज की hobbies है, my dear student, as collections, as that hobbies increases the collection of coins, stamps, etc. As unit increases, stock increases, utility also increases. That's why the law of DMU is not applicable in the case of hobbies, because as the stock of every coins and stamps increases, utility also increases. It is again the law of demand. Second point, music. Now right here, music. In the case of music, DMU is not applicable, because as more and more listening of music, those who are the lower of the music will get more and more utility. Thus, in the case of music, law of DMU is not applicable or hold true. Right now, third point, my dear student, drunkard, शराबी, जो शराब पीता है my dear student, जितना ज्यादा पिएगा और उसका मजा बढ़ेगा. थोड़ा पिया तो घूमने लगा, और पिया तो झूमने लगा, और पिया तो लेट गया रस्ते पे. हाँ मेरे स्टूडेंट, यूटिलिटी क्या हुई? बड़ी, घटी नहीं, बिकॉज ऑफ एवरी डोज. तो इन द केस ऑफ लॉ ड्रंकार्ड, लॉ ऑफ DMU इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज एवरी डोज ऑफ वाइन will provide him more utility. That's why in the case of drunkard, the law of DMU is not hold true. The fourth one point is that money. In the case of money, the law of DMU will not be applicable, because the value of money never decreases with increases in the stock of money. Okay, my dear student, it always remains constant. Now come to the point miser. My dear student, miser means कंजूस. जो कंजूस आदमी होता है, उसके पास जब पैसा आता है तो बोलता आजा आजा और आजा भाई, कम मत हो. देखे होंगे आपने, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनका हाल वही है, दिनों रात आ जाए, कम ना हो भाई. So in the case of miser, the law of DMU is not applicable, because every unit of money or stock of money will provide more and more utility to those who want to money, and the person who hold money and is stock, every stock he wants more utility. It means in the case of miser, law of DMU is not applicable, because every stock of money will provide him more and more utility and satisfaction. Okay, my dear student. Now it's completed over here, my dear student. ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जैसा बताया हूँ, आप ऐसा लिखिए, पॉइंट्स याद कर लीजिए आप, और एक्सेप्शन में डू नॉट राइट मच मोर पॉइंट्स. 5 or 6 पॉइंट इज इनफ, और इफ यू विल नॉट राइट 5 or 6 पॉइंट, राइट ओनली 4 पॉइंट. ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होंगी. बहुत आसान है, सिर्फ पॉइंट्स याद करो और आप थोड़ा थोड़ा लिखो, इसमें हो जाएगा आपका. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर ऑन माय चैनल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे पसंद आया होगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप चीजें आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज टेल मी, कमेंट्स मी. ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ बना के लाता हूँ.
और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो आपको डे बाय डे डेली यू विल गेट लेक्चर्स ऑन योर यूट्यूब। ओके माय डियर, तो इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं लोड करूं मेरा लेक्चर तो आपको फौरन आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।